चलिए आज बनाते हैं ये ब्यूटीफुल से इयररिंग्स जो कि बने हैं पेपर से। क्या आपको क्विलिंग आर्ट के बारे में पता है? इसमें ये स्ट्रैप्स आते हैं जिनको आप रोल करके क्विलिंग आर्ट करते हैं। मैंने 7 टाइम्स लाइट ब्लू एंड डार्क ब्लू पेपर को रोल करके ये क्रिएट किया। उसके बाद हम इसको पुश करके डोम शेप क्रिएट कर देंगे, आई पिन इंसर्ट करेंगे और उसे भी सिक्योर कर देंगे। फिर हम जंप रिंग्स लेंगे और उसमें फिश हुक डालकर हमारा इयररिंग रेडी कर देंगे जो कि कुछ ऐसा लगेगा। फिर हम ये लेस लेंगे और उसको भी इस पे पेस्ट कर देंगे। हम ये क्यूट फ्लावर्स को भी इस इयररिंग में कनेक्ट कर देंगे आई पिन से। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी कि मैंने ये फ्लावर्स कैसे बनाए। फिर हम ग्लॉसी लुक देने के लिए वार्निश का कोट भी कर देंगे। वोला, हमारा इयररिंग रेडी है। कितना सुंदर लग रहा है ना? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यू हैव अ गुड डे। बाय बाय। तो आज हम बनाने वाले हैं ये क्यूट केक इयररिंग्स। ये मेरे बर्थडे स्पेशल इयररिंग्स होने वाले हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए आपको यूज करना है सॉफ्ट क्ले विच इज इजीली अवेलेबल। यहाँ पे मैं रेड, पिंक और व्हाइट कलर यूज करने वाली हूँ मेरे केक को रेडी करने के लिए। केक की टॉपिंग करेंगे हम क्यूट स्ट्रॉबेरी से जो कि इतनी प्यारी लग रही है। कॉमन स्ट्रॉबेरी इफ यू लव टू ईट देम। फिर हम इसके साइड में लीव्स की कटिंग को पेस्ट करेंगे और उस पे थोड़ी सी डिटेलिंग करेंगे। फिर अपनी क्रिएटिव साइड को ऑन रखते हुए हम इसमें और डिटेलिंग्स ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे पिंक और रेड कलर को मिक्स करके कुछ डार्क पिंक शेड बनाया। फिर मैंने उसके छोटे छोटे बॉल्स बनाकर इस पूरे केक के साइड्स में लगाए। फिर हम इसमें आई पिन, जंप रिंग और फिश हुक को अटैच कर देंगे एंड हमारा इयररिंग रेडी है। कैसा लग रहा है? अगर आपको केक पसंद है तो आप ये इयररिंग जरूर बना सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। Let's DIY mushroom earrings. Pretty easy to make. Give it a try. I am using soft clay to make these mushroom earrings. Let's get creative and use colors that you like. Feel free to use this color combination too. Do you love mushrooms? Mushrooms are not only beautiful from the outside, but it has a lot of health benefits too. Making earrings with soft clay is always fun, but make sure you are very careful while using it. Just enjoy the process of creating something new. Subscribe to my channel if you like my art. Let me know in the comments below what you would like to see in my next video. Our mushroom earrings are ready to be worn. Aren't these one of the cutest earrings I created? Thank you for watching. Do like the video and share it with your friends too. Namaste. EID's special earrings. Let's begin. For this DIY, I'll be using pink, blue, and white colors. Let's make a moon shape with white color. Mix pink and blue together to achieve this effect. Press it to make a circle. Let everything dry completely. Make 2 holes using a needle. And then let's connect them with jump rings. It's very delicate, so try to be very careful. Now we will carefully attach for different length chain on each side of the jump ring. And then we will use for jump rings and add a pearl to each. Then we will connect it on each end of the chain we connected earlier. Alright, special earrings are ready. It's very simple and easy to make. If you enjoyed making this with me, then do subscribe to my channel. Thank you for watching.